ओके गोटे वीडियो क्लियर अच्छी स्टार्ट करि परिबा क्लास So, hello everyone. I'm your Sudipta ma'am. Welcoming you all to Vedang Civil Services powered by Vedang Institute of Technology. Okay, tell me how are you all guys? केमती कौन preparation चलीची बाकी पिला सब आज कुआडे गले जल्दी जल्दी कनेक्ट हुआ ओके सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन स्टार्ट करिबा आज क्लास सो स्टार्टिंग द क्लास आपण मानक पई पछरे देखुथिबे टुडेस पंच लाइन इज देखा जाउची तो पंच लाइन आपण को कोन कहूची द स्टार्ट वेयर यू आर यूज start where you are use what you have and do what you can कौन कहला आउ थरे बुझंतु देखो यस रूपाली गुड इवनिंग तो स्टार्ट जोठी तमे अच्छा भाबनी कि एटा ठीक टाइम स्टार्ट करिवार कि नाही जस्ट स्टार्ट इट आफ्टर दैट यूज व्हाट यू हैव तम पाखरे जेतिकी दिमाग अछि सेतिकी ही लगाओ भाबनी कि मो पाखु अधिक दिमाग आसी जिवो कि मो अधिक भलो पाठ पढी कि आउ टिके बेस्ट एग्जाम देबी जेतिकी तम पाखरे अछि ताकू बेस्ट करिया को ट्राई करो एंड बसी पड़नी कि मु आउ टिके पूरा मंत्र फंत्र पढ़ी कि मो पाई किछ छोटे हबो डू व्हाट यू कैन जेतिकी करि परिबो जस्ट करो भाबी बारे टाइम वेस्ट करो नाही दिस इज ऑल अबाउट इट से तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो प्रीलिम रे साइंस एंड टेक रे आपनकर को टाइप रो क्वेश्चंस आसे जेनुइनली हैला आज रो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो जो माने क्लास आसी नाहंदी बहुत ही मिस करिबो आसो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसे तो मिक्स हे के आसे बट मोर ओवर आपन माने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करले फंडामेंटल आपनकर क्लियर हे जिवो हैला तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची टिके देखो now consider the following statements regarding the chandrayaan 3 आपनकर केबे हेतिला ना इट वाज इन अगस्त 23 2023 रे हेतिला होना नै खो एठी कोन अछि ताकू नै कि सेंटेंस टिके देखिबा ना इट एम टू डेमोन्स्ट्रेट द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून कोठी ना मून रो सरफेस रे सॉफ्ट लैंडिंग मून रो साउथ पोल ले सॉफ्ट लैंडिंग करिछि किए ना चंद्रयान 3 सेथि पई ए सेंटेंस आपनकर राइट हेई गला अलगा कोनोसी कंट्री आपनकर सॉफ्ट लैंडिंग ए पर्यंत करी नाही so here your answer is right होना नै को after that it was launched using the GSLV MK3 rocket एटा मते कहलो राइट हबो या नाही एटा मते कुह राइट हबो ना नाही GSLV यूज करी थिला कि yes एटा हमर GSLV आपनकर यूज करथिला MK3 एंड आपनकर LVM3M4 जोटा कि तार प्रीवियस ना थिला एटा चेंज हेकी GSLV MK3 हेतिला ऑन जुलाई 2023 रे आपनकर फ्रॉम द श्रीहरिकोटा सतीश धावन स्पेस सेंटर कोठ आपनकर जाइथिला ये आपनकर सतीश धावन स्पेस सेंटर रु जाइथिला श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश केबे लॉन्च हेतिला केबे ना इट वाज लॉन्च ऑन द 14th of July 2023 so yes this sentence also true then it carried a rover named pragya the pragya आपनकर राइट हबो या नाही को मते carried the विक्रम लैंडर पचारिले विक्रम एंड रोवर पचारिले प्रज्ञा तो लैंडर कौन थिला लैंडर पचारिले दैट वाज द विक्रम ओके
देन आपणकर रोवर थिला किए ना प्रज्ञान थिला सो सेंटेंस आपणकर तीनटा जाक राइट हे गला एठी तो ऑप्शन कोन अछि 1 and 2 2 and 3 1 and 3 only or 1 2 3 ऑप्शन 3 will be the right one बुझा पडुछि ना नाही डिस्कवरीज आपणकर कोन करथिला जाई कि ना विक्रम कैरीड करी कि नहीं थिला सॉरी कैरी करिथिला विक्रम लैंडर को एंड प्रज्ञान रोवर को जोटा कि कैपेसिटी केते थिला 26 केजी विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर मिसिकी तार कैपेसिटी केते थिला ताको छाडी दियो प्रज्ञान रोवर रो वेट केते थिला 26 केजी थिला प्रज्ञान रोवर रो वेट एटा भी मन रखि था एग्जाम रे एटा पकाए केते थिला ना 26 केजी थिला यार वेट ओके एंड जाई कौन फाइंड आउट करिछि ना डिस्कवर करिछि द सल्फर ऑक्सीजन एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन were detected on the lunar surface तो आमे कहि परिबा lunar surface रो तो चंद्रयान 3 रे डिटेक्ट हैला चंद्रयान 1 आपनकर केबे जाइथिला मते कहिलो टिके चंद्रयान 1 आपनकर केबे लॉन्च हेतिला ना 2008 रे लॉन्च हेतिला एंड फर्स्ट टाइम जेते बेले चंद्रयान 1 आपनकर लॉन्च हेतिला फर्स्ट टाइम जेते बेले चंद्रयान 1 केबे 2008 रे लॉन्च हेतिला आमे कहि परिबा कि फास्ट रे से वाटर डिस्कवर करि देइथिला कि लूनार सरफेस रे वाटर अछि बोली डिस्कवर करथिला चंद्रयान 1 आफ्टर दैट चंद्रयान 2 आपनकर केबे डिस्कवर हेतिला माने केबे आपनकर लॉन्च हेतिला 2019 रे चंद्रयान 2 थिला चंद्रयान 2 was 2019 रे हेतिला एंड सी आपनकर कोन हम कहबे पार्शियली एटा फेल्योर हेतिला बट ऑर्बिटर एपर्यंत तार एक्टिव कंडीशन रे अछि एपर्यंत हम ताकू पाइबा एक्टिव कंडीशन रे अछि बाकी चंद्रयान 3 रे आपनकर सक्सेस हैला एंड सॉफ्ट लैंडिंग अछि लूनार साउथ पोल रे एंड हमें कहउचे अगस्त 23 को स्पेस डे बोली नेशनल स्पेस डे बोली मोदी जी डिक्लेयर करे छन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो टिके आसा ना with reference to the Indian regional navigation satellite कौन कहछि ना IRNSS that is India's regional navigation satellite IRNSS so it provides okay so यार आंसर मते दो था क्विक एटार आंसर मते दियो सेंटेंस वाइज कोटा हबा राइट आंसर आंसर देला गुड इवनिंग करण कुमार कौन हबा राइट आंसर सो कौन कहउची IRNSS को नै कि it provides accurate position information service to the users in India तो IRNSS को जदि आपण माने आखि आगरे नौ छंती ताहाले मते कोंतु कोटा हबा राइट आंसर स्टेटमेंट 1 कौन करची हो ना नहीं गाइस ये आपनकर प्रोवाइड करूची व्हाट IRNSS होची हमर ओन इंडिया रो नाविक सिस्टम जोटा को गोटे आमे रीजनल जानिचे नाविक एपर्यंत आपनकर इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस पाइनी इंटरनेशनली आपनकर जीपीएस अछि जोटा को आमे एज ऑफ नाउ यूज करूचे जोटा कि यूएसए रो जीपीएस इंडिया रो कोन अछि ना ओन नाविक सिस्टम अछि आज एटा को पढाई छै आप क्लास रे जदि रूपाली तमन माने पढि परथुवा ओके सो या अकॉर्डिंग कोन करछि ना इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विस टू द यूजर्स इन इंडिया ओनली सो ये आपनकर राइट हे जिवो हो ना नहीं मते को यस और नो देन आसिला स्टेटमेंट 1 कौन होची ना इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजीशन डाटा अप टू केते ना 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन बाउंड्री जदी पचार गला केते किलोमीटर एक्यूरेट माने कोन इंडिया रो केते भितरे ना बाउंड्री रो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस भितरे आपण मानकु से एक्यूरेट आंसर लाइक एक्यूरेट जहां भी आपण इंफॉर्मेशन मागिबे सेटा आपण को जीपीएस अकॉर्डिंग माने जीपीएस भले आपण को प्रोवाइड करि परिबा नाविक सिस्टम हैला तो एटा आपण लिखि दे दिबे 1500 किलोमीटर आपनकर रहउची कोन बाउंड्री एतिकी जिंस एंड फॉर द सिविलियन एंड द रिस्ट्रिक्टेड एनक्रिप्टेड हमें कहि परिबा यूजर्स देन सेंटेंस 2 कोन कहउची
ना इट आल्सो नोन एज नाभिक यस नाभिक आमे कहूचे नाभिक रो फुल फॉर्म कोन द नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाभिक रो फुल फॉर्म कोन होची नेविगेशन विथ नाभिक एने लाइक एने वी रु आपण आसुची आईसी रु इंडियन कॉन्स्टेलेशन केतेटा सैटेलाइट को नै की कॉन्स्टेल एडा हेची मैं नो कहि परिबो रूपाली आज पढैथिली केतेटा कॉन्स्टेलेशन होची ना टोटल 7टा को नै कि आपनकर स्टेटमेंट 3 अकॉर्डिंग कोन देखुछ देखो इट यूजेस ओनली 2 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नो ये आपनकर टोटल केतेटा ना 7टा सैटेलाइट को नै कि आपनकर ये कॉन्स्टेलेशन होची केतेटा ना आपनकर टोटल 7टा जीईओ रे जोटा को हमें कहूचे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सेथिरे आपनकर 3टा सैटेलाइट एथिरे फॉर्म होची आपनकर कोन as of now 3टा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट रे देन जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट जोटा को हमें कोन कहूचे ना जीएसओ कहूचे एथिरे आपनकर केतेटा ना 4टा सैटेलाइट रहूची तो एमिति हे कि टोटल आपनकर कोन होची ना 7टा एटा को सपोज आपण माने जानिबे कि दिस इज आवर अर्थ and this is our equatorial line okay this is our equatorial line okay india आपनकर एई पोजीशन रे रहूची हना नै तो इंडिया रो एठी आपनकर 1 2 3 4 ए जो चारिटा को हमें कहूचे दिस इज नोन एज द जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट दिस इज द जीएसओ दिस इज कॉल्ड एज द जीएसओ एंड इक्वेटोरियल ऊपर आपनकर 3टा सैटेलाइट रहूची इक्वेटोरियल ऊपर 3टा सैटेलाइट रहूची एंड इक्वेटोरियल ऊपर जो सैटेलाइट रहूची से माने जो ऑर्बिट को राउंड ऑफ करूचंती ताको हमें कोन कहूचे ना दैट इज द जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड एज द जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और द जीईओ हैला ये केतेटा ना 3टा अछि एमिति मिसै के हम टोटल 7टा क्लियर बुझी पारो छ हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सो या अकॉर्डिंग हम राइट आंसर कोन होची ना 1 and 2 कारण 3 आपनकर कंप्लीटली रॉन्ग हे गला 1 and 2 कोठी अछि ऑप्शन ए विल बी द राइट वन बुझा पडुछि ना नाही मते खाली कुह बुझा पडुछि नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक मते कुह consider the following statements about the Aditya L1 mission Aditya L1 mission कोन आपनकर this is a solar mission this is what this is a solar mission that means to study sun's corona आमे आदित्य L1 को पठेइचे हैला to study what ना गोटे मिनिट टिकेट यार आंसर दियो तो ओके तो यार आंसर दियो क्विक इंटरेस्टिंग लागु छी ना नाही मते खाली कुह इंटरेस्टिंग लागु छी ना नाही आदित्य L1 हमें पठे जे कोन ना सन रो कोरोना दैट मींस अपर लेयर को हमर स्टडी करू मु जाननेटा कोठी करती मु एबे देखिली कटि जाईची बोली मु एबे देखिली कटि जाई आनी दियो चलो चलियो ओके तो आदित्य L1 कोन होची ना सोलर मिशन लाइक हमें कहि परिबा टू study the sun's corona to study sun's corona हमें पठेइचे आदित्य L1 को एंड आपनकर लैंग्वेज पॉइंट जोटा कि डायमेंशनली अछि 3 डायमेंशनल फेज रे हमें कहूचे आदित्य L1 अछि होने नै को तो या अकॉर्डिंग कोन हबो सेंटेंस को टिके स्टडी करिबा देखो so it is India's first dedicated solar mission yes एटा आपनकर फर्स्ट सोलर मिशन इंडिया रो डेडिकेटेड सोलर मिशन ओके next देखो it is placed in a hollow orbit around the L1 point of the sun's earth system होना नाही मते को hollow orbit आज ही क्लास रे तमन को करी छी so that रिवीजन हे जो बोली भी आनी चाहते हैं हैला so hollow orbit कोटे polar orbit कोटे hollow orbit कोन कहूची ना आदित्य हमर जो पठा जाई छी या आपनकर एक्जेक्टली केते डिस्टेंस रहउची ना अर्थ थ्रू 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस रहउची सपोज हियर इज योर अर्थ हियर इज द सन
आपणकर पॉइंट एई पाखा पाखी आसीबो आदित्य L1 जोटा हमें आदित्य L1 तो पठेइचे दिस इज द L1 पॉइंट हमें ता कहूचे लाग्रांज पॉइंट एठु यार डिस्टेंस रहउची केते ना 1.5 मिलियन किलोमीटर ओके तो ये जो मिलियन किलोमीटर आपनकर टोटल डिस्टेंस कवर करूची कि आदित्य L1 दैट इज द सैटेलाइट टू कोन स्टडी द सन्स कोरोना हमें ताको पठौचे होना नहीं को so it was India's first dedicated solar and it is placed in the hollow orbit ए जो orbit रे ए जोटे dimension से form करजी suppose एठी आपनकर रहिबो this one L1 point then 1.5 km पछकु ही जीवो एठी आपनकर L2 point रहिबो Lagrange point 2 then आपनकर एठी आसीबो L3 then एठी आसीबो L4 and same एठु एतिकी डिस्टेंस एतिकी एक्जेक्टली ए पाखा पाखी आपनकर L4 डिस्टेंस रहिबो तो एटा L4 रहउची देन एठी आपनकर गोटे 3 डायमेंशनल बनेइबो L3 को जीवो L4 को जीवो देन एटा को आसीबो देन फुनी एठी जीवो तो जो डायमेंशनल वे रे करूची एंड जदी गोटे ऑर्बिट रे हमें बुलुची गोटे सैटेलाइट हमें जो L1 को आदित्य को पठौची आदित्य L1 एठी आसीबो या परठू आपनकर बोथ सन पाखरे भी किछि मैग्नेटिक पावर अछि सन भी टाणिबो आमर पृथ्वीर भी किछि माध्याकर्षण शक्ति अछि तो तांका भितरे से आपनकर गोटे ऑर्बिट रु ना ऑर्बिट सन आडू को जाई भी परिबनी कि पृथ्वी को फेरी परिबनी सो भितरे आपनकर गोटे पॉइंट गोटे इमेजिनरी पॉइंट हमें ताको L1 ना देछि सेइथे आपनकर से राउंड ऑफ करिवो एंड जो राउंड ऑफ करिवो ताको हमें कोन कहूची से ऑर्बिट को कहूचे दैट वाज द हैलो ऑर्बिट हैला ताको हमें कोन कहूचे ना दैट इज द हैलो ऑर्बिट देन तो ए सेंटेंस आपनकर राइट हे गला ओके बहुत ठीक गारे हे गला सॉरी सॉरी ये बहुत गारे हे गला ओके अच्छा तो नेक्स्ट सेंटेंस कौन कहूची ना इट एम्स टू स्टडी द सोलर कोरोना एंड मैग्नेटिक स्टॉर्म्स यस एबे ही कहली सरो आपनकर कोन ना सोलर कोरोना को स्टडी करिबा लागे सो 1 2 and 3 ऑप्शन डी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा पडुची तो गाइस बुझी पारुछ सबु ना माइंड ऊपर जाउची मते कुआ ट्राई करछि बहुत ही सिंपली वे रे आपन को बुझेला लागे हैला आसो तो फास्ट एटा मन रखो ग्लोबल पैरेललिज्म में देखिबा जेमिति हमर इंडिया रो फास्ट सैटेलाइट जाईछि आदित्य L1 सेमिति आपनकर नासा रो पार्कर सोलर प्रोब ता ना 2018 रे फास्ट टाइम पे जाईछि ओके कोन पार्कर सोलर प्रोब और PSB भी बोली भी त माने ना रखी मन रखी पारि हैला आसो तो देखो रिगार्डिंग द गगनयान मिशन व्योममित्र गगनयान मिशन और व्योममित्र अकॉर्डिंग जदि हमें जिबा व्हाट विल बी द राइट आंसर सी को सेंटेंस कौन कहूची ना इट एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम हां ना नहीं को यस और नो आपनकर फर्स्ट टाइम पई ए गगनयान मिशन ता कोन थिला ना तीन जण इंडियन साइंटिस्ट और हमें कहि परिबा एस्ट्रोनॉट्स जहा को हमें व्योमोनॉट्स बोली कहूचे से एस्ट्रोनॉट्स को कोन कहै जिवो व्योमोनॉट्स बोली कहै जिवो इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 500 किलोमीटर पर्यंत तांको पठा जिवो कारण आपनकर लो अर्थ ऑर्बिट कोठु गोजा स्टार्ट होउची ना आपनकर एनवायरनमेंट रु 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर पर्यंत आपनकर लो अर्थ ऑर्बिट रहउची तो ए व्योममित्र आपनकर को जाय जिवो ना ये आपनकर अप टू 400 किलोमीटर जाय जिवो फॉर केते दिन ना फॉर 3 डेज पई and 3 days भितरे ह्यूमन जाई कि स्पेस रे सर्वाइवल कंडीशन रे रही परिबो ना नहीं तापरे रिसर्च करके आसीबो so aim to send 3 Indian astronauts or called as the Vyomonauts into low earth orbit for 3 days next rahila so it was right one option 2 it is being implemented by ISRO with Russian collaboration ha pick eta hei paribo ki Russia provides the training but the mission is implemented by the ISRO wholly so it was the or it is the पर्यंत जेतु हेइनी so it is the indigenous of the India so it आपनकर एठी रॉन्ग हे जिवो नेक्स्ट कोन कहूची देखो ओके नेक्स्ट कोन कहूची देखो मते so it includes both manned and unmanned mission ये आपनकर बोथ मैन अनमैन मिशन को इंक्लूड करिवो की कुआ मते क्विक यस so it includes 2 unmanned test flight before the manned launch unmanned means आपनकर कोन जीवो व्योममित्र आपनकर जीवो होना नहीं so याको हमें कहूचे 2 unmanned test flight आपनकर जीवोटा अनाउंस केबे हेइसला 2018 रे आपनकर अनाउंसमेंट हेइतिला
गगनयान 1 अनक्रूड मिशन आपनकर 2025 रे जिबार थिला बट एपर्यंत प्लान हे कि अछि सक्सेस हेइनी एंड गगनयान 2 तारा भी 2025 26 मे भी 26 एंड आड़ को जाई पारे हैला या फिर सॉरी 25 एंड आड़ को 25 तो एंड हे सालानी कोन 26 आड़ को जीवो आ कोन तो राइट आंसर कोन हबो ना ये आपनकर 3 टा भी राइट हबो 1 एंड 3 ऑप्शन अछि कि वेरी गुड नेक्स्ट चलो मते को कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दिस इज अ टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल हमें कहि परिबा लॉन्चर कहि परिबा जहां थ्रू रे सैटेलाइट ऊपर को जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन हबो को मते जल्दी तो इट इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल इज इट अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल यस और नो मते खाली कहि चलिबो हैला यस और नो यस आपनकर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज अ टाइप ऑफ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल 4 स्टेज launch vehicle or an echo okay then also it can place a satellite in both polar and geosynchronous orbit कि आपनकर both polar and geosynchronous earth orbit रे जाई परिबो कि काहे कि को माइंड तो क्वेश्चन आसुथबो एको काहे कि हमें कहूचे 4 स्टेज रो काहे कि कहूचे 4 स्टेज रो because solid liquid आपनकर 2 टाइप्स रो प्रोपेलेंट यूज हुए एबे तो 3 टाइप्स रो प्रोपेलेंट यूज होची कोन one is the solid another is the liquid and another is the cryogenic तो एटा आपनकर PSLV रे कोन यूज होतुला ना गोटे फेज solid देन गोटे फेज liquid देन गोटे फेज solid देन अगेन द liquid तो चारिटा स्टेज रे आपनकर प्रोपेलेंट यूज होउथिला and the orbits is the polar orbit and go to polar also sun synchronous and the GTO ए तीनटा को यूज करके आपनकर ऑर्बिट रे कोन लॉन्च होथिला आपनकर PSLV एंड या थ्रू रे कोन चंद्रयान 1 आपनकर PSLV देकी लॉन्च हेसी मंगलायन आपनकर 2013 मने पडुची मंगलायन भी आपनकर PSLV देकी हेची सो PSLV रो T37 मॉडल भी मने रख 2017 रे आपनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड करिथिला 104 सैटेलाइट को आफ्टर माने 2017 सुधा 104 टा सैटेलाइट को से PSLV थ्रू रे लॉन्च करी सारिची इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करथिला सबुटु हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को ता थ्रू रे लॉन्च करिबार एटा भी मन रखिथिबो ओके सो राइट आंसर कोन होची इट वाज द फर्स्ट लॉन्च इन 1993 एटा आपनकर फर्स्ट लॉन्च हेतिला 1993 रे की हुआ मते एटा आपनकर फर्स्ट लॉन्च हेतिला 1993 रे की यस इंडिया वर्कर लॉन्चर जोटा कि हमें आकु कोन कहूचे ना वर्क हॉर्स याकू आपनकर इसरो रो वर्क हॉर्स बोली भी कहवा जाउची हैला वर्क हॉर्स बोली याकू कहवा जाउची तो राइट आंसर कोन हबो 1 2 and 3 as usual ऑप्शन डी नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखिबा तो मते को with reference to the GSAT series of satellite they are primarily communication satellite GSAT satellite को हमें primarily कौन कहबा is a type of communication satellite yes or no रे खाली मते आंसर दबो हैला कोन अछि तो मते को they are primarily communication satellite yes GSAT माने हमर कोन कहूची ना that is the communication satellite TV हैला आपनकर टेलीकम्युनिकेशन हैला ओके ब्रॉडबैंड हैला एंड डिजिटल कनेक्टिविटी हैला तार ऑर्बिट कोन आसीबो ना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दैट मींस 36000 रु 36000 किलोमीटर एभव आपनकर एटा को लॉन्च करिया को पड़िबो एंड मेट्रोलॉजिकल लाइक यूज पई भी हमर एटा को दरकार पडुची ओके आसा तो आपन कोन होची ना दे आर प्लेस्ड इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ये आपनकर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट रे ही आपनकर प्लेस होंती एंड जदि हमें देखिबा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इनसैट द्वारा आपनकर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हुए सो राइट आंसर कोन एठी होबो जीसैट द्वारा हुए नहीं जीसैट द्वारा आपनकर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हुए नहीं गोटे जदि हैला कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो ये आपनकर पुनी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन काई करिवो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आपनकर की करिवो ना इनसैट करिवो ये आपनकर इनसैट करिवो ना कि जीसैट हैला सो
So 1 and 3 wrong हे गला, 1 and 2 will be the right answer. Next, go next. बुझा पढुची ना त मानकर किछि माने होल्ड होल किछि नै, मु पढौची त माने किछि बुझुना, किछि बुझा पढुची तो GSAT 19 2017 रे आपन एटा स्टार्ट हेतिला माने लॉन्च हेतिला, कैरेट इंडिजिनियसली डेवलप हेतिला हमर इंडिया रे के यू पैन के ए पैन जेटा गोटे टाइप रो ट्रांसपोंडर्स हमें जानि छे, जोथरे आपनकर डाटा सपोज एठी मु आपन मानको पढौची, डाटाटा अपलिंक होची, तापर पुनी ट्रांसपोंडर थ्रू रे एम्प्लीफाई हेकी पुनी अगेन डाउनलोड होची, जोठी कि तुम माने देखि पारुचो। तो ये सब टेक्निकल वर्ड्स आपन मानको जानिबा को पड़िबो। फर्स्ट टाइम पे जीसैट यूज हेतला 2001 रे, ए जीसैट 2001 रे लॉन्च हेला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहिबो, आसा अबाउट द रिसेट। अच्छा रिसेट माने कोन? दैट इज द रडार इमेजिंग सैटेलाइट, दैट मींस जेते सब सैटेलाइट लॉन्च होची, जेते सब मिसाइल लॉन्च होची, सी मेन थिंग होची मिसाइल लॉन्च होची, या फिर आपनकर किछि भी आपनकर वेपन्स लॉन्च होची, तो सेथिरे आपनकर कोन करा होची ना ट्रायल एंड टेस्टेड भी करा होची, लॉन्चिंग पूर्वरु इम्प्लीमेंटेड पूर्वरु आपनकर डिप्लॉय करिबा पूर्वरु आगो ताको ट्रायल एंड टेस्टेड करा जाउची। तो सेते बेले रडार सैटेलाइट जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट रहउची रिसेट रहउची से ताको डिटेक्ट करि पारुची। जदि हमें रिसेट सेंड न करिबा हमरे काको स्पेस को, ताहाले हमर इजीली माने डिटेक्ट ही परिबनी। तो ये राइट आंसर कोन हो? देखो रिसेट यूजेस द रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी टू ऑब्जर्व द अर्थ सरफेस। Yes or no? Yes, obviously अर्थ रो सरफेस ऊपर नजर रखिले ही तो को मिसाइल लॉन्च होची, क्रूज मिसाइल के, बैलिस्टिक मिसाइल के, एंटी क्रूज मिसाइल सब जिंस देखिबो हरे नहीं। देन आसिला इट कैन कैप्चर इमेजेस इवन अंडर क्लाउडी कंडीशंस। कुहंतु मते क्लाउडी कंडीशन ने देखि परिबो कि नाही? आई सिंथेटिक apparatus radar गोटे ना रहउची मन रख SAR, तन फुल फॉर्म कोन ना सिंथेटिक apparatus radar, दैट इज SAR। ओके ए सिंथेटिक apparatus radar कोठी ना हमर इजराइल फर्स्ट टाइम पे हमको हेल्प करिथिला, हमें ताकू ता सहाय्य रे फर्स्ट टाइम पे बनेइथिले। आफ्टर दैट हमरे ओन इंडिजिनियस बनेइछे। से सब बहुत ही डीप जिंस आपन मानू के कहले बुझी परिबेनी, बट आपनकर ए जो आपनकर सार रहउची और SAR रहउची, दैट इज सिंथेटिक apparatus radar रहउची, दैट अलाउज द इमेजिंग इन द डे एंड नाइट, माने ऑल वेदर आपनकर हेई परिबो इमेजिंग। ता पूर्वरु आपनकर थिला टाइप्स ऑफ कोन ना ए आपनकर पॉसिबल हो नथिला। ओके सो एठी आपनकर यस दिस इज द SAR माने तारो हेल्प रे हेई पारुची। रिसेट 2 वाज लॉन्च्ड बिफोर रिसेट 1। मते को रिसेट 2 आपनकर बिफोर रिसेट 1 हेइथिला कि माइंड रे आसुची को मते? अमित केही जानिचो? सबु बेले आपन मन को कंफ्यूज करबा लागि ए स्टेटमेंट ता एग्जाम रे पकेइबो। रिसेट 2 वाज लॉन्च्ड बिफोर रिसेट 1। आपण माने भाबुथु रिसेट 1 ता आगो लॉन्च हेतिबो, रिसेट 1 हेतिबे ताना दिया जाइछि, तापरे 2 लॉन्च हबा, सेति पे 2 दिया जिवो हो ना नहीं को। बट रिसेट 2 आपनकर 2009 रे लॉन्च हैला, रिसेट 1 आपनकर 2012 रे लॉन्च हे। या पछरे गोटे अलगा स्टोरी, इजराइल को नेकी यार स्टोरी हैला। क्लियर? तो एटा भी आपनकर राइट हे गला। तो ये आपनकर टोटल ऊपर जो रिसेट रहिछि, ये आपनकर कोउथरे हेल्प करे ना? इट यूज फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द बॉर्डर सर्विलांस केस रे हमें ताकू तार हेल्प नहीं पारुचे। सपोज रिसेट 2B हैला, जेटा कि 2019 रे आपन को लॉन्च हेछि, दैट एनहांस द इंडिया सर्विलांस पोस्ट कोन ना बालाकोट रे आपन को जो स्ट्राइक हेतिला मने पडुची 2019 बालाकोट स्ट्राइक, तो सेते बेले आपन को रिसेट 2B यूज हेतिला। ओके ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसो। सो राइट आंसर एठी कोन 1 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट विषय रे मते कहिलो कोड स्टेटमेंट ता राइट हबो? को जल्दी जल्दी एस्ट्रोसैट विषय रे मते कुह को सेंटेंस ता राइट हबो? क्विक। एस्ट्रोसैट लॉन्च केबे हेछि? 2015 रे एस्ट्रोसैट आपनकर लॉन्च हेछि, मने रखि थाओ। So the consider following statements about the AstroSat 2015 रे लॉन्च हेछि। So is it India's first dedicated multi-wavelength space observatory? Yes or no? Yes. The multi-space observatory आपनकर different planets आमे कहिबानी गोटे exactly चंद्रायन हेले lunar like lunar study पई गला, मंगलायन हेले मार्स स्टडी पई गला, हो ना नहीं? तो आदित्य L1 हेले सन स्टडी पई गला, शुक्रायन जीवो
माने आपन कोन वेनस रो स्टडी पई बट एटा आपनकर जो जाईची एस्ट्रोसैट से आपनकर डिफरेंट एस्टेरॉइड्स हैला प्लैनेट्स आउ जेते रहिले किछि किछि जिंस माने एवरीथिंग जहां पर भी नजर पकेबो तार इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करबो से दिस इज अ मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड ये कहा द्वारा लॉन्च हेची मते कहिलो ये भी आपनकर पीएसएलवी द्वारा ही लॉन्च हे ये भी आपनकर पीएसएलवी 30 द्वारा पीएसएलवी C30 द्वारा लॉन्च हेची केबे ना 2015 ओके मने पके पारुछो देन आसो it studies both x-ray and ultraviolet regions of the electromagnetic spectrum ये आपनकर राइट हबो कि यस तो ये आपनकर ऑब्जर्व करिवो द x-ray द UV रे एंड द ऑप्टिकल बॉन्ड्स जोटा आपनकर माने ऑप्टिकल बैंड जोटा आपनकर स्टार्ट हो जिन हमर फ्रीक्वेंसी बैंड हैला आपनकर रेडियो एफएम रा डिफरेंट बैंड टीवी सिनेमा आपनकर चलिबो डिफरेंट बैंड टीवी रे सीरियल चलिबो सेटा भी डिफरेंट बैंड सो एई टाइप रा बैंड ऊपरे ये आपनकर स्टडी करिवो इट वाज लॉन्च्ड बाय द जीएसएलवी ना एबे पा कहली पीएसएलवी द्वारा हेची so 1 and 2 will be the right answer 3 8 eliminate हे गला नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहबो किछि बुझा पडुछि ना मुंडा ऊपर जाउछि रे किछि बुझा पडुछि तो नेक्स्ट आसो तो मते कुह रिगार्डिंग द कार्टोसैट सैटेलाइट विषय रे हमर कोटा हबा राइट आंसर कहिलो क्विक कार्टोसैट सैटेलाइट को नेकी मते कुह व्हाट विल बी द राइट आंसर that is the earth observation satellite हैला कार्टोसैट आपनकर कोन ना दिस इज द earth observation satellite so they are used for high resolution earth observation obviously earth observation satellite माने से तो यूज करिवो ना हाई इंटर कैमरा यूज करिवो ऑब्जर्वेशन करिवा लागि एने ऊपर जाउछि अरे भाई वासो so they support cartographic urban planning and infrastructure applications ये कोन आपन को प्रोवाइड करिवो कि yes or no को yes ये आपन करो कोन ना प्रोवाइड करिवो हाई रिजोल्यूशनरी इमेजरी फॉर मैपिंग प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इवन इट ऑपरेट कोठ होची ना सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट रु ये आपन करो ऑपरेट होची जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट रु नुह आपनकर कोठु ना सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट रु ही लॉन्च हबो सो राइट आंसर एठी कोन 1 and 2 हे जिवो राइट आंसर सो नेक्स्ट क्विक जिबा त बुझा पडुची कार्टोसैट 2 सीरीज लाइक यूज फॉर द स्मार्ट सिटीज लाइक आपनकर पीएमजीएसवाई माने पडुची त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ए सब पई रोड मैपिंग पई आपनकर कार्टोसैट रो सीरीज टोटल लॉन्च हे हैला आसो नेक्स्ट कार्टोसैट 1 अपन को 2005 रे लॉन्च हेतला एको भी मन रखो हैला आसा नेक्स्ट मते कुआ अबाउट द इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA इट इज आ मते कुआ ISPA अकॉर्डिंग कोटा हबा राइट आंसर कहबो फलसे हैला मते कुआ कोन अछि It is an industrial body that represents Indian space sector. Yes or no? Yes. इटा अपन को 2021 रे फॉर्म हेतिला केबे ना 2021 रे ये फॉर्म हेसी and it is a industrial body to help the Indian space sector. हैला फर्स्ट प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री बॉडी कहिथिली मने पडुची आपले के नाहंती बोते का कहिबी ओके आसो सो टू इट वर्क्स क्लोजली विथ ISRO and InSpace हां की yes it works with the ISRO and the InSpace next kon achi na it is chaired by the Prime Minister of India only the Department of Space is under the Prime Minister of India जेहेतु एटा आपनकर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनी ये आपनकर पीएम को अंडर रे आसीबो नाही द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 रे फॉर्म हेतला जे कि आपनकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अंडर रे ही डायरेक्ट आसीबो एंड ISRO आपनकर डीओएस रो अंडर रे सो इनडायरेक्टली ISRO आपनकर पीएम को अंडर रे बुझा पडुची and the founding members किए रहिबे माने एथरा आपनकर द ISPA रो ना भारती एयरटेल देन आपनकर L&T एंड आपनकर OneWeb ए सब आपनकर डिफरेंट रहिबो बट चेयर ये कहा द्वारा होची ना ये चेयर बाय द भारती ग्रुप दिस इज चेयर बाय द भारती ग्रुप तो कौन हबा राइट आंसर 1 and 2 ओनली दिस इज रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन स्पेस कौन हबा अच्छा डबल हे गेला कि इन स्पेस बदल रे ना ना ठीक अछि इन स्पेस अकॉर्डिंग इट वाज अबाउट ISPA this one is the in space हैला
मते कुह इट एक्ट एज अ regulator for private space activities in India ये आपनकर कोन करूची प्राइवेट एक्टिविटीज करूची कि मते कुह यस ये आपनकर प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हेसी कोठु मने रखो ना अंतरिक्ष रु प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हेसी हैला अंतरिक्ष रु बट ये आपनकर होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट आमे आको कहूची द कमर्शियल आर्म ऑफ द आपनकर इसरो बट आपनकर इंस्पायर होची इट एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर द प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज इन इंडिया हैला केबेटा हेतिला ना इट वाज सेट अप इन द 2020 केबे 2020 रे एंड हेडक्वार्टर कोठी ना अहमदाबाद रे इट वाज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लाइक सबु जिंस आपनकर डीओएस रो अंडर रे ही आसे इट वाज डीओएस रो अंडर रे यार डिपार्टमेंट माने आपनकर फॉर्म करूची एंड ये केबे आसीथिला ना 2020 रे यार एस्टैब्लिशमेंट हेची एंड हेडक्वार्टर कोठी ना अहमदाबाद okay next also it is an independent agency under the department of space yes it is an independent agency that's true also that authorize the regulatory of the private sector okay example आपण sky route aerospace नहीं परिबे अग्निकुल आपनकर कंपोज अग्निकुल कंपोज विषय जानि छ लाइसेंस पाइछि स्पेस द्वारा having any idea so right answer इथे आपनकर कोन हबो ना 1 2 and 3 okay ना रो it is responsible for commercial satellite launches ना ये commercial satellite launches पे हबनी so 1 and 2 only 3 sentence तो मु पढ़ी नथिला so 1 and 2 only will be the right answer okay it is launch operation handled by the NSIL आपनकर लॉन्चिंग बंचिंग ये सब तो आपनकर इंस्पेक्ट करिवो बट लॉन्चिंग आपनकर ओनली NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैला NSIL तारा बुझिबो नेक्स्ट देखो आसो तो मते को रिगार्डिंग द GSLV Mac 3 that is the LVM3 हैला एटारे कोन हबा राइट आंसर मते कुआ फर्स्ट कोन आसुची ना फर्स्ट देखो इट इज इंडिया's मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल यस GSLV MK3 होची इंडिया रा मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल मन रखिता एंड इट दिस इज द इंडिया's heaviest rocket renowned नंबर हेसी LVM3 भाबरे LVM3 भाबरे एटा परे रिनाउ हेसी लैटरली माने प्रीवियसली हमें जानचे ताकू GSLV भाबरे एटा मन रख हैला एंड एटा इंडिया रा सबुटो हेवीएस्ट रॉकेट बोली भी जानि था एंड एटा केबे लॉन्च हेसी ना 2022 रे इट वाज लॉन्च्ड इन 2022 सेकंड सेंटेंस कोन कहूची ना इट कैन कैरी पेलोड अप टू 4 टन्स टू GTO यस अप टू 4 टन से कैरी करि परिबो लाइक लो अर्थ ऑर्बिट को GTO को कहिले माने जियो स्टेशनरी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट को हेले 4 टन जे कैरी करि परिबो जदि हमें LEO को कहिले लो अर्थ ऑर्बिट को कहिले ताले ऑलमोस्ट 8 टन आपनकर कैरी करि परिबो दिस ट्रू देन इट वाज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग द चंद्रयान 3 हां चंद्रयान 3 पे को हम यूज करथिले सो 1 and 2 and 3 आपनकर तीनटा जाक राइट आंसर हे जिवो व्हाट हैपेंड क्लियर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट मते कुओ नंबर 13 about the one way project मते कुओ one way project कोन हैला so मते कुओ one way so about one way project जल्दी या पर आंसर दियो टिके It is a satellite internet constellation project. OneWeb अपन करा गोटे satellite constellation project की yes it is a satellite internet constellation project. UK based satellite internet constellation होची इटा and ISRO रो LVM3 has launched multiple OneWeb satellites. Yes or no? Yes अपन करा ISRO LVM3 launched OneWeb batches from the Sriharikota 2022-23 batches रेटा अपन करा हेतिला and it was co-owned. कौन अछि इट इज फुली ओन्ड बाय इसरो नो एटा आपनकर को ओन्ड बाय द भारती ग्रुप कोन भारती ग्रुप एंड यूके गवर्नमेंट तो मन रखिता ये आपनकर भारती ग्रुप प्लस यूके गवर्नमेंट ओके ओन्ड हेजी ता द्वारा सो 3 एलिमिनेट हे गला राइट आंसर विल बी 1 and 2 नेक्स्ट बा
So with reference to the small satellite launch vehicle mate कहलो SSLV SSLV को नहीं कि मते टिके कुह हैला what will be the right answer that is the small satellite launch vehicle. Good evening Rakesh सब कुआडे जाउछ तो माने कथा म राती 10टा क्लास रे बोल कुह with reference to the small satellite launch vehicle mate kuh it is designed to carry small satellites up to 500 kg एटा right answer की ना ये आपनकर only low earth orbit पर्यंत जाई परिबा this is designed for the 500 kg payload to the low earth orbit okay जाई परिबा so it can be assembled quickly with minimal infrastructure हे परिबा की yes it can quickly आपनकर assemble हे परिबा कारण बहुत ही छोटो at least 1 week भीतर ही आपनकर हमरा कोन total assembly हे परिबा small crew रे यूज होची low cost रे परिबा almost 30 crore भीतर आपनकर ये माने बजेट थाए लो अर्थ ऑर्बिट रे किछि रॉकेट लॉन्चिंग पई एंड आपनकर एई जे SSLV पई almost 30 crore बजेट भीतर ये हे परिबा एग्जांपल आपण माने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट S2 को नै सॉरी O2 को नै परिबे हैला ताकू नै परिबे ओके आजित सैट को भी नै परिबे सॉरी आजादी सैट को नहीं परिबे जेटा को गर्ल सैटेलाइट बोली कहते क्वेश्चन आसीबो गर्ल सैटेलाइट बोली हमें अलगा को सैटेलाइट को जानि छे दैट इज द आजादी सैट अच्छा so with reference to the small satellite launch vehicle the SSLV it is designed to carry the small satellite that's true and it can be assembled quickly with minimal infrastructure that's also true it was first launched in 2022 एटा right ना wrong मते कुआ first अपन को 2022 रे launch हेइथिला की yes or no yes so right answer 1 2 1 3 next इबा sorry मैम लेट हे गला आसुथिलो कोन पई तमे मु जानि परलिनी तमे आछो कोन पई गायत्री एठी so about the nisar mission quick कहिला मते about the nisar mission जोटा को हमें कहि जे कोन ना नासा प्लस इसरो मिसी के बाहर करछंती दैट इज द नासर सॉरी निसार तो मते कहबो निसार मिशन विषय रे कोन माने राइट आपनकर इंफॉर्मेशन अछि इट इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन बिटवीन द नासा एंड इसरो कहि तो देली यस बोली कहि तो देली यस बोली हां ना नहीं कुआ हां ना नहीं कुआ ताजो शरम तो नाही किछि तम मुह को क्लास छाडी के जाइछो बरा खाइबा पई आहुरी मो मुह खोलानी राती 10 टा रे तमाने कथा बुझिबी कहिछि ना कुआ so it is a joint earth observation mission that's true launch हेदिला केबे ना 2025 रे भाया कोउतिरे ना SpaceX रो Falcon 9 मने रखो SpaceX द्वारा एटा आपनकर हेल्प नै कि करा जाइथिला Falcon 9 रे केबे 2025 रे हैला it uses synthetic aperture radar for surface deformation mapping it uses हाँ ना नहीं मते कुह it uses L band कौन यूज करूची ना L band नासा करूची L band इसरो करूची X band these are the types of band आपनकर यूज हुए कोथि पई ना radar detection पई L band के करूची ना ये आपनकर नासा करूची then S band के करूची ना इसरो करूची clear so right it will study changes in the earth biomass and glaciers ये आपनकर कोन पठा जाई छी की biomass and glaciers ऊपर स्टडी करिबा लागि yes or no yes it studies the glaciers forest oil like आपनकर कोन soil रे केते moisture रही छी biomass ऊपर earthquake ऊपर so definitely will map the Himalayas every 12 days for the tectonic movement also हैला so right answer कोन हबो 1 2 1 3 complete so ये आपनकर कोन हिमालय ऊपर टोटल डिटेक्ट करूची कि विद इन 12 डेज भीतर माने 12 डेज रे थरे ता ऊपर कोन राउंड ऑफ करूची ऑर्बिट रे जाई कि घुरी के आसुची हैला नेक्स्ट मते कुह रिगार्डिंग द इंडियन स्पेस ओके कोन हबो राइट आंसर आपन माने कहिबे so it encourages the private participation in the space sector yes or no quick
केबे हेतिला आपनकर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 रे अनाउंस हेतिला एंड इट एनकरेज करबा पई कोथि पई कना ना सुनछ ना स्पेस पॉलिसी रे आपनकर टोटल सबुथि रे एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपनकर पूरा छूट दिया जाइतिला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपनकर फास्ट पॉलिसी थिला एटा लॉन्च करबा माने पछरे या पर्पस थिला कि एफडीआई को पूरा फुल परमिशन मिलु इंडिया रे इन्वेस्ट करबा लागि बट दीटा केस रे से तार कोन रेस्ट्रिक्शंस रखितिला से दीटा केस कोन दीटा केस थिला हमर कि लॉन्च करिवो जदी सैटेलाइट मेकिंग एंड लॉन्चिंग ता पछरे आपनकर लगे हैला तो सेटा त आपन माने डिफरेंट थिंग पढिबा आपन माने बट एटा को इट एनकरेज द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द सेक्टर दैट्स ट्रू ओपन द स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट इंडस्ट्री या पर फोकस ये करूतला ना इसरो ओनली फोकस करिवो अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नथिंग मोर एंड इन स्पेस कोन करूतला ना रेगुलेटर भले काम करूतला एनएसआईएल कोन करूतला ना कमर्शियल ऑपरेटर कमर्शियल आर्म में कहि परिबा इसरो रो द प्राइवेट फर्म्स हमें कोन कहूचे दैट अलाउड टू ओन सैटेलाइट्स एंड द ग्राउंड स्टेशंस ओके सो एग्जांपल हमें ले परिबा स्टार्टअप्स लाइक द स्काई रूट अग्निकुल कहिथिली ऑलरेडी ताकू नै परिबो इवन मेनी मोर सो 1 2 1 3 नेक्स्ट आसो so about the अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन सो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग कोटा हबो राइट आंसर डे कहलो अंतरिक्ष आपनकर स्टार्ट हेतिला प्राइवेटाइजेशन एठू हैला कोन हबो राइट आंसर मते कहिबो फास्ट देखो ना इट इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो यस दिस इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो दैट इज द अंतरिक्ष माने रखो एस्टैब्लिश केबे हेतिला 1992 रे ये आपनकर एस्टैब्लिश हेतिला द इसरो रो कमर्शियल आर्म so it markets space products and services globally yes आपनकर globally कोन मार्केट रे लॉन्च सर्विस करिवो ट्रांसपोंडर्स एंड सैटेलाइट डाटा ए सब को आपनकर कोन ना माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिवो ता कथा बुझिबो आपनकर अंतरिक्ष ये आपनकर डीओएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर रे आसुची हैला एंड ये फेस करूची आपनकर बहुत सारा करि परिबे देवास हैला अंतरिक्ष आर्बिट्रेशन केसेस हैला 2011-12 रे आपनकर अंतरिक्ष आर्बिट्रेशन केस लागिथिला ताकडी भी मन रखिबा दैट इज इंटरनेशनल लेवल सो यस दिस ट्रू इट इज डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नो ये आपनकर डीओएस अंडर रे सो 1 and 2 नेक्स्ट मते कुह रिगार्डिंग द एनएसआईएल that is the new space india limited I have already told you about that next मते कुह it handles the commercial operations of isro एबे त मानु कहिथिली तो ए स्टार्टिंग है जे अंतरिक्ष रो सी आपनकर कमर्शियल आर्म बट आपनकर कोन ना एनएसआईएल भी आपनकर कमर्शियल डे को हैंडल करे so right answer कोन हबो ना पीएसयू अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दैट इज सेट अप इन द 2019 माना नहीं को so yes that's true it is a public sector enterprises under the department of space ये आपनकर पब्लिक सेक्टर ने नहीं मते को हां ना it is public sector enterprises under the department of space it was established in 2019 कहि तो देली 2019 so 1 2 1 3 option D quick next so about the UBICA program मते कहिला UBICA program कोन and what is that UBICA stands for that is the युवा आपनकर कोन विज्ञानी कार्यक्रम हैला युवा विज्ञानी कार्यक्रम that is the UBICA कौन हबा राइट आंसर याकू देखो ना इट एम्स टू ट्रेन यंग स्टूडेंट्स इन स्पेस साइंस यस यंग स्टूडेंट्स माने जो मानकर इंटरेस्ट डेवलप करिवे किछि नुवा नुवा जिंस इन्वेंट करिवे ते मान को ट्रेन करिवे स्पेस साइंस रिगार्डिंग दिस इज द युबिका हैला नेक्स्ट में देखो एंड एटा को स्टूडेंट मान को भितरे ना एटा लॉन्च हेतिला 2019 रे अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स क्लास 8 रो 9 school student so it is organized annually by isro याकू आपनकर किए ना annually isro ही organize करूची yes or no मते को yes very good so only post graduate students post graduate in हो आपनकर 8 9 student only so 1 and 2 only next मते को consider the following statements about the GSAT 7 series GSAT 7 this is the type of series हमें कहि परिबा और नहीं को so GSAT हमें कौन कहूचे this is a defense communication satellite GSAT 7 series total 7 टा आपनकर communication satellite हैला so कौन आसी फर्स्ट स्टेटमेंट्स पढा GSAT 7A सर्विस द इंडियन एयर फोर्स A फॉर इंडियन एयर फोर्स हां नहीं मते को GSAT 7A A फॉर एयर फोर्स मन रखो एटा आपनकर केबे लॉन्च हेतिला ना 2018 रे
GSAT 7B B B रु मन रखो दैट इज फॉर इंडियन आर्मी हैला इंडियन आर्मी ये आपनकर ता परे लॉन्च है 7A परे 7B आपनकर लॉन्च है 2024-25 रे देन GSAT 7C GSAT 7C आपनकर नाभी को नेकी ये आपनकर नाभी नावल कम्युनिकेशन पई हां राइट आंसर तो ये भी आपनकर ऑलमोस्ट सही एरा रे माने 2020 24 एंड रे आई थिंक आपनकर 7C लॉन्च है so yes right answer एटा so GSAT 7 आपनकर जदी 7 ओनली कहूची ओनली GSAT 7 स्टार्टिंग केबे हेतिला एटा आपनकर नावल पर्पस रे इंडियन नाभी पई हैला मन रख 2013 आपनकर फर्स्ट सीरीज लॉन्च हेतिला दैट इज GSAT तापरे एंड सो ऑन चलला क्लियर so 1 2 1 3 नेक्स्ट और देखो रिगार्डिंग द मेगाट्रॉपिक मिशन मैम टॉपिक वाइज जीके क्लास केबेठु हबो टॉपिक वाइज मोस्ट प्रोबेबली मंडे टू स्टार्ट करिया बिकॉज़ ए वीक टोटल टा आपनकर ऑलरेडी मु बने साची कंटेंट मते आहुरी टाइम लागियो पुनी सेटा जदी टाइम वेस्ट करी बनेवा पई त आपन मानकर हेछि जेहेतु रिवीजन कर मंडे टू स्टार्ट so mane ko regarding the megatropic mission it was a joint mission between India and France yes or no mate khali kahibo hela so mega katha कहला माने मन रखो आपनकर PSLV द्वारा लॉन्च हेतिला 2011 रे हेतिला and it was a joint mission between India and France then it studies the tropical weather and climate system yes or no tropical climate rainfall humidity ए सब ऊपर आपनकर की ना मेगा ऊपर ध्यान रखिबो मेगा मेघ कोठी आसीबो क्लाइमेट रे सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रेनफॉल ह्यूमिडिटी सब ऊपर हैला नेक्स्ट इट वाज प्लेस्ड इन ना ना ये आपनकर लो अर्थ ऑर्बिट रे कि आपनकर एलियो रे लॉन्च हेछि हैला so wrong 1 and 2 next about the chandrayaan 1 mission मते को chandrayaan 1 mission कथा माने पडुची 2008 मसिया कथा कोन पछाछि टी देखिबा about chandrayaan 1 हां सर छाड़ दो 2 मिनिट about the chandrayaan 1 mission kon kochi na it confirmed the presence of water molecules on the lunar yes chandrayaan 1 आपनकर 2008 रे लॉन्च हेतिला and यही आपन को गोटे हिंट्स देथिला कि लुनार सरफेस रे आपनकर वाटर molecules that is the H2O is present तो H2O प्रेजेंस अछि ता परे ही चंद्रयान 2 पय हमें ट्राई करले ता परे पुनी चंद्रयान 3 पय ट्राई करले हना नै खो so yes it was launched using the PSLV rocket ये आपनकर PSLV rocket द्वारा यूज करी की लॉन्च हेछि कि yes PSLV C11 द्वारा एटा आपनकर लॉन्च हेछि ओडी it was used launching PSLV कोन C11 so it was India's first lunar mission एटा इंडिया रो yes first आपन 2008 रे देन 19 रे देन 23 तीनटा तो हेछि आ कोन ओके क्लियर मंडे मींस आहुरी 5 days रहे जो मंडे दिन आउखो मंडे रे हां प्रभात सेही मंडे हैला तो एति की थाउ त मानकर आ मु एक्चुअली 30 टा क्वेश्चन आनिथिली बट एटा हेई पालानी बिकॉज़ सब डिटेल ले कहिया को पडुछु त मानकू टिंकू संग क्लास टाइमिंग स्टार्ट हे गलानी माने सारे बे रेडी हेकी आसिलेनी सेट करिवे तो चलो नेक्स्ट क्लास रे पुनी देखा हबो त मानकू गोटे मेंस रे क्वेश्चन सहित मेंस टाइप रो केमती कोन क्वेश्चन से पर्यंत टिके नि थैंक यू गाइस देखा अब अगेन रात 10 टा रे और रात 10 टा रे आज आपन कर के क्लास असम सबु प्रेजेंट डायरेक्ट फास्ट प्रायोरिटी